Hello everyone, welcome back to our PYQ series. So yes, you have read it right. We bet that you must have missed these information in the NCERTs. नजरों के सामने रहता है but फिर भी ध्यान नहीं जाता है until unless it has been asked somewhere या कभी किसी ने इस बात को हाईलाइट किया है. So I'm very sure about it. Yes, अगर आपने इसको इनकाउंटर किया है बहुत ही अच्छी बात है और उस अच्छी बात को ये भी आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर आप जानते हो तो उसको अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं. लेट्स हैव अ लुक. So we are going to discuss this series of information which is related to medieval history. So let me tell you that medieval history का जो पैटर्न है especially related to CSE prelims के एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ रहा है. medieval को लोग इग्नोर करके जाते थे, अभी medieval history पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. So let's have a look and let's see the question first. So here we have our question. The question is saying, this is a question which was asked by UPSC in the recent exam in 2023. The question is, Chandi Mangala, a 16th century text, was composed by whom? So तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो चंडी मंगला है, कहाँ का है, और ये 16th सेंचुरी में, मिडिवल हिस्ट्री में, मिडिवल टाइम में, मिडिवल इंडिया में इसको कंपोज किया गया है. एंड बाय होम? हेमा सरस्वती, माधव कंडली, तुकाराम, मुकुंदराम चक्रवर्ती. तो ये चक्रवर्ती साहब ने किया है या सरस्वती और कंडली किसने किया है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आया कहाँ से है, इसको पढ़ा कैसे जाए, अगर ये हमारी नज़रों के सामने था तो मिस कैसे हुआ. सो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट. सो इफ़ यू विल ओपन योर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, जिसमें मिडिवल इंडिया की बात हुई है, मिडिवल हिस्ट्री की बात हुई है, थीम्स इन इंडिया पार्ट 2, दैट इज अ बुक ऑफ क्लास 12th, है ना. क्लास 11 12th में थीम्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, जो एंशिएंट मिडिवल में और मॉडर्न की इंफॉर्मेशन को डील करती हैं. सो वहाँ पे आपको ये पार्ट 2 मिलेगा. इन दैट देयर इज अ चैप्टर थीम 8, जिसमें दे आर डीलिंग विद दिस थीम ऑफ पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट व्हेन अग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल पीरियड, दैट इज 16th-17th सेंचुरी में अग्रेरियन सोसाइटी और मुगल पीरियड के टाइम क्या चीजें थी. सो हियर दे आर डिस्कसिंग इन दैट रिगार्ड. नाउ in this chapter on page number 208, this topic, this subheading is there, forest and tribes. Forest and tribes की बात हो रही है, and in that they are talking about lot of information which you should read carefully. Before this subheading forest and tribe, there is peasantry, about women in agrarian society, इन सब की बात हुई है. अब बात हो रही है forest and tribes की. Forest and tribe में the book is telling that there was more to rural India other than the sedentary agriculture. And they are saying apart from this intensively cultivated provinces in northern and northwestern, जो और हिस्से थे, the dense forest and the scrub land which were known as jungle और खरबंदी, they existed all over eastern India, central India, northern India, Indo-Nepal border, झारखंड, है ना, peninsular India, western घाट्स, Deccan plateau. तो बेसिकली ये कह रहे हैं hills, forest, ये कहाँ पे थे other than the plain areas. जंगल, फॉरेस्ट एरिया को ये बोल रहे हैं जंगल, स्क्रब लैंड को खरबंदी. तो कभी कभी ये कीवर्ड्स आ जाते हैं. खरबंदी इन मिडिवल इंडिया वाज की टर्म और द टर्मिनोलॉजी वाज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस. सो सबसे पहले तो ये आपकी लर्निंग हो गई. व्हेन यू विल फर्दर प्रोसीड एंड यू विल रीड द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज, देयर यू विल फाइंड दिस बॉक्स. ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है आपको ये मिलेगा. दिस बॉक्स इज सेइंग दिस इज एन excerpt from 16th century Bengali poem. तो यार ध्यान रखिए, Bengali poem, Chandi Mangala. So it was a Bengali poem. The question is asking about this only, Chandi Mangala, Bengali poem. By whom? By Mukundaram Chakrabarti. So it has been written in Bengali. It has been written by in 16th century, and it has been written by Mukundaram Chakrabarti. Next, the hero of the poem, Kala Ketu, set up a kingdom by clearing forest. जब वो क्लियर करके, फॉरेस्ट क्लियर करके किंगडम सेटअप करता है, तो ये जो पूरा नैरेटिव है उस बारे में है. That when he clears the forest, how outsiders came from various lands, hearing the news, outsiders comes from various land. तो ये पूरी स्टोरी में यही बताया कि कैसे लोग आउटसाइड से आके सेटल होते हैं जब ये फॉरेस्ट लैंड क्लियर किया था. एंड कालाकेतु सेटअप्स अ किंगडम बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट. सो इट इज टॉकिंग अबाउट, थीम भी पता चल गया, पहले बंगाली में हो गया, 16th सेंचुरी में हो गया, बाय चक्रवर्ती जी हो गया. एंड इट इज टॉकिंग अबाउट, द थीम इज अबाउट, उसमें से एक हिस्सा उठाया गया है विच इज अबाउट क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड हाउ आउटसाइडर्स स्टार्ट सेटलिंग देयर.
दे स्टार्ट कमिंग देयर। इसी से अटैच्ड एक बॉक्स है विच इज टॉकिंग अबाउट व्हाट फॉर्म्स ऑफ इंट्रूजन द फॉरेस्ट डज द टेक्स्ट इवोक, मतलब किस तरीके के इंट्रूजन की बात कर रहा है। एंड दे आर सेइंग प्लीज लुक एट द फिगर 8.9 एंड आइडेंटिफाई हु वर दीज फॉरेनर्स। सो 8.9 जो इमेज है वो ऐसी इमेज है, और इस इमेज में आपको देख के बताना है हु वर दीज फॉरेनर्स। सो दीज फॉरेनर्स वर, as you can see here, Mughals, they were the outsiders. So this book is talking about Mughals were invaders. धीरे 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 वो फॉरेस्ट में आने लगे, फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे, इस तरीके से आउटसाइडर्स का इन्फ्लक्स होने लगा, राइट। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो थी चंडीमंगला उसके बारे में पता चल गया। नाउ डोंट स्टॉप हियर, अंडर द सेम थीम ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स, जो फोर्थ पॉइंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल चैप्टर, द होल चैप्टर इज वेरी वेरी क्रूशियल। इट टॉक्स अबाउट जमींदारी सिस्टम, इट टॉक्स अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इट टॉक्स अबाउट मेनी अदर थिंग्स, इट टॉक्स अबाउट मेनी कीवर्ड्स, मनसबदारी सिस्टम, बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज हुआ है इस पेज में। 30 पेजेस 32 पेजेस का ये चैप्टर है। बट under the same theme of forest and tribes you will come across and you will find another purple box. Here the box is talking about trade between hill tribes and the plains in 1595. 1595 में जो हिली रीजन्स थे, हिली ट्राइब्स थे और प्लेन के जो लोग थे उनमें किस तरीके का ट्रेड होता था। When you will read, you will find that this has been written by अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी, उस आईने अकबरी में इन्होंने जिक्र किया है। And he has mentioned the transactions between the hill tribes and the plains in the Suba of Awadh, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर है, लखनऊ के आसपास वाला रीजन। तो किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता था। So he has mentioned lot of commodities, that how from the northern mountain the quantities of goods were carried on back or the ponies, सब कुछ तो ट्रेस कर लोगे। कुछ इंपॉर्टेंट अगेन कीवर्ड्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर यू हैव चुक, इट वॉज एन एसिड कंपोज्ड ऑफ ऑरेंज जूस एंड लेमन बॉइल्ड टुगेदर, उसका कुछ पर्पज होगा। देन पोमोग्रेनेट सीड, जिंजर, लॉन्ग पेपर, देन मजित, अ प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड डाई, सो डाइंग के पर्पज के लिए मजित का यूज होता था। अनदर कीवर्ड यू विल फाइंड जेदोअरी, a root resembling turmeric, ठीक है। Merlins, a kind of bird. So what I am trying to say is, when we come across such questions, we should do our 360-degree analysis. आज पहले तो सोर्स आइडेंटिफाई हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर सोर्स नहीं आइडेंटिफाई हो गया तो इसी क्वेश्चन के थ्रू आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके सारी इंफॉर्मेशन निकालो। When we found the source, we found that on the same page other information is given. The question can be in 1565 according to Abul Fazl or Aine Akbari talks about exchange between the hill tribes and the plain region. What kind of commodities were exchanged? अगर ये दे देंगे आपको 1, 2, 3, 4, how many of the above were the tradable items in 1565? आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड होता था इन चीज़ों का। So second information is very very crucial. You should know the items जो ट्रेड होते थे, जो एक्सचेंज होते थे, किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता था, किस तरीके की कमोडिटीज थी। ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट, अगेन डोंट स्टॉप हियर। जब आप उसी टॉपिक के अंदर आगे बढ़ोगे, पेज नंबर 211, वी स्टार्टेड फ्रॉम 208, वी आर स्टिल ऑन 211 itself. So there you will find, though the transition from a tribal to monarchical system had started much earlier, they are talking about कैसे ये forest clear हुआ and tribal system got converted into monarchical system. So they are saying that monarchical system had started much earlier. The process seems to have become fully developed only in 16th century. But this whole process got matured in 16th century. There again they are talking about certain important keywords, key things, key information which we should know. They are saying Abul Fazl's Akbar Aini observation on existence of tribal kingdom in the northeast. अभी क्या है, UPSC, this is second perspective which I want to give to all of you. अभी UPSC is asking peripheral questions. All those who have if you have attended the workshop, there we have discussed in detail about what kind of themes, topics UPSC is asking, in especially from last 4 years if we analyze, last 5 years if we analyze, किस तरीके के topics पूछ रहे हैं, peripheral topics.
UPSC has exhausted mainstream topics. By looking at the question which we have decoded just now, you would have got to know that how an information is being picked up from the purple box, that is peripheral information. In the similar manner, we have one peripheral information in front of us. They are saying, Aine Akbari, Abul Fazl's Aine Akbari mentions about war was common. For instance, Koch kings fought and subjugated a number of neighboring tribes and long sequence of war through the 16th and 17th century. So यहाँ से हमें बस एक ही चीज़ निकालनी है कि कोच किंग्स कौन थे. तो कोच किंगडम, कोच किंग्स, इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक, देखा कितनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें मिले. So इस चैप्टर हार्डली फ्रॉम 3-4 pages we have come across lot of peripheral information which either UPSC is asking in the recent exam 2023 में और we should know. तो एक तो हमने देख ही लिया कि यूपीएससी ने पूछा, बाकी इंफॉर्मेशन हमें किस रूप में पता होनी चाहिए. चुक, an acid composed of orange juice and lemon boiled together. Majid, a plant producing red dye. Zidori, a root resembling turmeric. Commodities, किस तरीके की commodities का exchange होता था. तो ये नाम अगर आ जाता है, you should know about it. और these were what? These were commodities. Next information which we got to know is Koch dynasty. तो Koch dynasty के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. Ahom kingdom, Koch dynasty. ये नॉर्थ ईस्टर्न की डायनेस्टी है, पेरिफेरल अगेन हो जाती है, मेन स्ट्रीम की नहीं है, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. So Koch dynasty was established by Biswa Sinha in 1515 to 1540. His tenure was there. 1515 से 1540. So कहीं somewhere around 1520, 1550 से आपका ये शुरू हो जाता है. Then Nal Narayan 1540 to 1557, 1587. He was very prominent person of Koch dynasty. They extended control over, जैसा बुक बोलता है कि neighboring tribes को से लड़ाई होती है and they overpower them. So it is saying that they extended the control over Bara Bhuyan tribes and established the Koch dynasty. So you should know about this. And in 1581, Raghav Dev, Nal Narayan's nephew, he split Koch kingdom into Koch Hajos and Koch Vihar. जैसा आज आप मैप में पढ़ते होंगे कूच बिहार. So कोच विहार तो डिवीजन हो जाता है. Koch Hajos were supported by Ahom, Koch Vihars were supported by Mughals. However, finally वो लोग ब्रिटिशर्स की सपोर्ट ले लेते हैं बाद में, Koch Vihar people. So this is the history. This is the peripheral information which you should know. And not only that, it has its linkage in current affairs as well. This is the news from 2021, 2023 में भी ये news थी with respect to the acknowledgement of Koch Raj Bongshi's as recognition of ST status. So this is how you should link. देखा एक पूरी complete cycle है. NCERT से information, peripheral information, lesser known information, then how it has its linkage in current affairs. और आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया. सो द होल पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स इज दिस इज हाउ यू शुड डू द 360 डिग्री एनालिसिस. 1. Second, this is how you should cover the peripheral topics. Third, this is how you should take the help of the PYQs to do the reverse engineering. And I'm sure if you will do like this, सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, फिर प्रीलिम्स में बाउंसर्स नहीं मिलेंगे. Talking about this, let me also tell you that like this we have discussed many such rare peripheral topics on our YouTube. In the playlist you will find, we have discussed about the Munjaniks, we have discussed about Battle of Saraighat, we have discussed about the guild system of medieval India, right? And we have discussed about Dadni system, Balutedar, Vijayanagar kingdom, Kakatiya kingdom. ये सारे peripheral information को हम लोगों ने discuss किए हैं. They are really very popular videos. You will go and if you look at the views and the comments, you will get to know about it. Now the point is, exam is approaching. We have learned the crucial information and I have also told you 3 to 4 perspectives like how you should cover and what are the takeaway points. Keeping those things in mind, we have come up with one initiative that I am going to talk. But before that, let me also tell you that the same question in a different format was asked by UPSC in 2019. It was Chandi Mangla was composed in which of the following language in 16th century? ये भी NCERT से ही हमें आंसर पता है, Bengali. This was in CDS 2019. So this is the importance of previous year question if we cover it thoroughly. अगर 2019 में किसी ने इसको ट्रेस किया होता तो उसको ये 2023 वाला क्वेश्चन आराम से पता होता that the person
who has composed is this book or this poem is Mukund Ram Chakrabarti. Now, the important perspective which I have given and we have already seen, we have demonstrated, and I told you that we have come up with an initiative, because as an aspirant you have a limitation. We have come up with this initiative where you must have seen this video of mine. If not, then please go and see why PYQs are gold mine. So we have come up with a PYQ based prelims test series. This is a very unique test series and very different from the conventional test series. Everything I have discussed in this video. We are running that test series for this year's student, UPSC CSE Prelims 2024 student, and we have got very good review about the quality, about the depth of the question. Here, why it is unique and why it is different, because the way we have discussed, this style has already rewarded us in the past. In 2022, we discussed 36 questions and 8 questions came from our analysis video. In 2023, we were already discussing the PYQ series on our YouTube, and we were running our current affairs program. That time we got 30 plus questions in the prelims. And this year we have introduced our PYQ series, PYQ based test series, along with our current affairs class is already going on, and we are doing this PYQ discussion video on YouTube. So this year we are very sure that a lot of questions are going to come from our analysis. So make use of the efforts which we are putting, make use of the efforts which we are putting behind the PYQ and giving the rare information. So do check the timetable, do check the quality of the questions. We have uploaded the demo question paper as well. Now, not only this, since we were getting a lot of good feedback and lot of good coverage we are doing, many aspirants who are preparing for 2025, they also started approaching us. So we have launched a very unique PYQ series, year-long, 15 months long test series for the aspirants who are writing the exam in 2025. And through this test series, we are making you revise prelims by December only. And January to May next year, you will be just solving full length test. So again, this is a very good opportunity to take this early lead of your preparation. So do check the timetable. Everything is given in the description box. And let me tell you, since it is our launch year, inaugural year, we are giving you 50% discount on both the test series, be it for the 2024 or even for the 2025. So do check about it. And since I have already discussed about PYQ based test series, so these are the features. You can have a look. Also, those who are interested in our current affairs program for prelims point of view, you are most welcome. So do have a look at it and stay in touch. Do like and subscribe and share this video if you think it is helpful for you and if you think it can help your friends. See you all. Bye-bye.